nobleman in Delhi was buried and became Kalandar Shahbaz. So how much more beautiful can we be than to discover that the first Delhi monarch to be buried at the feet temporarily at Sevan was Muhammad bin Tughlaq, who died of Sindh. Presumably of eating palla, but that's probably a Sindhi nationalist joke. But nevertheless, the dargah is there, and I think these people being there, the Dastangois being here, and of course the narrators of today's evening, I want to welcome you all on our 25th anniversary and join me in a special silent prayer for the restoration of Hamid Harun's health, who has been everything to all of us at Mohatta and in the culture of southern Pakistan. Thank you. Thank you. Thank you for helping us commemorate 25 years of the Mohatta Palace Museum. By way of introduction, I am Saima Zaidi, additional curator here at the museum. Welcome to our distinguished lecture series. Our fourth event, The Art of the Hamzanama, offers you a glimpse into the stunning miniatures here, and it is intended to recreate the court and the bizarre atmosphere of the era. The director, Mrs. Askari, will be telling you more about it. And if you haven't seen it, it's a must. It's the first. Now, please welcome Mr. Say a word of acknowledgement and thanks to Governor Asfar, Kamal Asfar Saab, who has taken the trouble of coming here to attend this particular lecture, and his beautiful and unforgettable wife, Naheed, who has been such a core element of everything that one associates with either beauty, culture, or literature or art. So I'm deeply grateful to both of you, as I am to all of you, for being here. I'd like to just mention on a personal note, since Shahnaz and I are both here, we met in Karachi. So Karachi has a rather special place. Came back. So we're here together after 50th was in 1971 when we got married. Formally, it would be appropriate to acknowledge the Board of Trustees and to congratulate them on the 25th anniversary of the Mohatta Palace Museum, your assistant, and also to the late Habib Fidali, who began when the Mohatta Palace was established and was responsible for part of its inception. Last of all, but perhaps certainly not least, is the irrepressible Mr. Hamid Harun. What can I say about a man who is a composite, rather like these Indian miniatures where they had all sorts of figures in one symbol? He is a composite of everything that is good, productive, and is impressive and worth emulating. Probably inside, too embarrassed? Okay. Hamid, when I grow up, I want to be like Hamid Harun. I'll be dealing in the next 20 minutes or so on the Hamzanama and the Bardic tradition. The Hamzanama, as Hamid had mentioned, and its descendants belong to a tradition when it was not necessary to be illiterate to enjoy the classics, which he had to keep engaged and interested. Who recite epics and are tied to a certain tradition, they were free to incorporate those elements that would make their rendition more topical or relevant to local conditions. They could recreate an imagined past association of the image with the text. And in those days, when the Hamzanama was prepared, the image would appear in front on one page, and on the reverse would be the text. So it was important for there to be fidelity of the text, of the illustration with the text. So in effect, what you'll be doing is holding up the illustration to an audience like you, and I, as the scribe or the Dastangoi, would then read the text from the back. This was cumbersome, but unavoidable at the time. Over a number of years,
this tradition of back to back was then replaced by having the text on one side of a manuscript and the illustration facing it. But again, there had to be specific correlation between the text and the illustration. It was a challenge which confronted every artist, as I'll demonstrate to you in a moment. The colophon to this manuscript is missing. None of the paintings has been signed. So today, if we attribute some of the paintings to separate artists, we do so on the basis of style, not of any written evidence that we have. But there were two painters who had been brought by Akbar from Iran, and they were the ones who have been regarded as the authors, if you like, of the Hamzanama. The first was, of course, Mir Sayyid Ali. He joined Akbar in 1555, and he was made responsible for supervising the Hamzanama. A contemporary chronicle mentions that it's now 7 years that Mir, Sayyid Ali, has been busy in the Royal Bureau of Books, as commanded by His Majesty in the decoration and painting of the large compositions of the Amir-e Hamza, and strives to finish that wondrous work. Although during the aforesaid period, 30 painters, equal to Mani and Behzad, who were very famous Persian painters, have constantly been devoted to the work, no more than 4 volumes could have been completed. He was then assisted by Khwaja Abdul Samad. Sayyid Ali goes on Hajj. Khwaja Abdul Samad, the matchless painter from Shiraz, is assigned the task of completing the assignment. The Khwaja has greatly endeavored to bring the work to completion and has also noticeably reduced the expenditure. That was important. Even kings had budgets. It brings the chest of armor to Hamza. So you have a narrative which has to be depicted in visual form. Zamurud Shah falls into a pit and he's then beaten to death by gardeners. Malik Iraj, challenged to a fight by the ambitious Zamurud Shah, slices off the trunk of his adversary's elephant. Iraj then hurls him into the sky, and despite the fall, unusually, Zamurud rewards Iraj with 13,000 leagues of his own kingdom. According to the text, when the demon threw Nur-Adar into the sea, Elias the prophet took him out of the water. It's a simple text, but the artist is challenged to depict the churning of the ocean, the churning of and then the fish and the prophet walking on water. The companions use arrows, but Umar on the left chooses a slingshot. Umar, in another episode, defeats another dragon, but what is spectacular is the drawing of the dragon and the color scheme that is used. We have Argandev bringing the chest of armor to Hamza. This is from volume 7 of the Hamzanama position, which many of you will recognize, the garden with linear divisions, etc., where Prince Alam Shah Rustam with Mir Afroz is sitting in a garden pavilion. Temples fall in the story. Temples fall, and the sea dries up on the birth of the Holy Prophet Muhammad. And in the story, Hamza travels to Mecca. And in a sense, this is an introduction of the movement towards orthodoxy. Because not only does he arrive in Mecca, but it has the effect in the manuscript where the faces are obliterated. So all the faces, or whether it's individuals or of the animals, as you'll see in a moment, stand obliterated. Umar, with his friends, they set Hamza free. And Hamza, you can see at the top, the punishment was he was put into a cage which was
at the top of a pole. And so Umar arrives, and they set Hamza free. And in this, you'll see that even the face of the elephant has been erased. The Mughal atelier was full of such manuscripts, and of all the loot that were pleaded to have returned to Delhi. 3 volumes of the Hamzanama, containing 20 folios each from the Gulistan Library, were exhibited in Vienna World Fair in 1873. Now, how did they arrive in Europe? I hate to say this. The sister of the then Shah smuggled them out of the Gulistan Library and sold them. Until then, she had been using these cloth paintings as curtains in her palace. And if it wasn't for, in fact, the assiduousness of Western collectors, even these folios would have been lost. 5 in Metropolitan, 4 in Brooklyn, and 3 in the Ashmolean, and single folios scattered across the world. Now, I'd like to emphasize one thing about the entire manuscript, and that was the fidelity to the text. There was no point in illustrating something which was not unrelated to the text. And I'm going to give you an example of this. It's taken from Guler painting, and it's of the Devi Mahatmaya. Now, the text of the Devi Mahatmaya narrates that the Devi is fighting with this buffalo demon who has the property of changing. So he can change, for example, into a tiger, into a man, into a demon, a buffalo demon, and an elephant, and then come back to his original form. Now, the artist is faced with this challenge. How do I show 4 different actions in one? And brilliantly, he does it in this case, where the Devi remains unchanged, but the demon, being evil, can transform himself from one to the other, to the third, and back into his original shape. In another case, in the Ramayana, the Sita is pointing to the golden deer, Marish, and she's telling her husband, Ram, that I want that. Okay? Now, that's the story. And then Marish becomes Ravan, abducts her, and takes her to Sri Lanka. But what is important about this is that the manuscript of the Ramayana has the text on the back. And again, it comes back to the origin of the Hamzanama. So the illustration would be seen, and the Purohit would be reading from the back. But the fidelity to the text was vital. The Bardic tradition continued. It continued in the West and again in the East. And that brings me to the present, from the Hamzanama to the Tilisme-Hoshruba. And I've dwelt in a little length with the various elements which are so critical. And the first of them is fidelity to the text. And that is why Shahnaz's translation of the Tilisme-Hoshruba from Urdu, Persianized Urdu, into English, and its fidelity to the original text makes it such a unique document. So now I'm going to ask Shahnaz to join me and give you her rendition and explanation of how she began this venture, what were the challenges she faced, and how the Tilisme-Hoshruba became the third party in our marriage. Master Allah Bakhsh, and it also, I've used it for the title cover of my book. It has all kinds of not recognizable characters. The only one that you can recognize is Amar Ayar, who is a childhood friend of Amir Hamza, and he has been blessed with these gifts like Zambil, which is a invisible pouch that contains several worlds, and he has been given the Jale al-Yasi,
which he's throwing here. So that is in fact the only recognizable kind of anecdote from the Tilisme Hoshruba. Otherwise it's Master Allah Bakhsh's imagination. But it's a wonderful painting and it's in the Lahore Museum. So I will now introduce the Tilisme Hoshruba to you. And in the way of all great Persian and Urdu epics, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the cupbearers of the wine of storytelling and the imbibers of wine from the goblet of paper tell us the story this way. Now, Tilisme Hoshruba is an Urdu magical epic that spreads over 7 large volumes, and each one of those volumes is as thick as my one condensed volume. In itself, it is only one part of the much larger Hamzanama, which in its totality exceeded over 46 volumes. This makes the Hamzanama the longest oral magical epic. The tradition began as an oral one, and the stories go back to 9th century medieval Iran. Storytellers or Dastangos, like the ones you will hear perform shortly, narrated scenes from the Hamzanama to crowds at tea houses, courtyards, and street fairs in towns fair and wide. The character of Amir Hamza is based ostensibly on the life of Hamza, of Hazrat Hamza, the uncle of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Hazrat Hamza had the reputation of being the strongest man of the tribe of Banu Hashim and fiercely protected his nephew against his enemies from the tribe of Quraysh. By the 18th century, Dastan narrators had become an essential entertainment in courts and palaces of India, where the court language was Persian. It is, however, in the 19th century that the Dastan got indigenized. The story of Hoshruba and the invisible Tilism of Zahir. Between the visible and hidden Tilisms is the river of flowing blood, spanned by the smoky bridge of Parizadan. The Tilism is an epic tale of heroism, of magic and trickery, enchantments, and the eternal struggle of good against evil. What I loved about the mythical characters was how human they were, complicated, multifaceted, sometimes contradictory personalities whose morality was too elastic for binary labels. My favorite character among them remains Afrasiab Jadoo, the king of wizards, ostensibly the villain of the story. When at the end I read as a child of his death, I was so affected I wept, and I could not understand why the rest of the world did not share my grief. The language of Tilisme Hoshruba is racy. It switches from the profound to the trivial, from the sublime to the frivolous. The narrators rely upon exaggeration, a free play of erotic desires and sensual pleasures, an erasure of boundaries between spirits and bodies, defiance of the laws of the physical world. In effect, it is a challenge to the authority of God by creating an alternate, parallel world where the ultimate authority belongs to the narrator. They could create character and transform them, for example, men into women, tricksters into dancing girls, spirits into humans. Now, I'd like to say a little about how women are portrayed in the Tilism. These are not wilting maidens hiding behind tall walls, waiting to be rescued by sweaty soldiers. To give you a flavor of the language of Hoshruba and a bit of my translation, I will do a couple of readings, and I would like Ijaz to come and help me with them. Dikha bandane gulshan mani और गुलचीनान बहारस्तान नुक्तादानी गुलजार तहरीर में सरीर कलक से यूँ जमजमा संजी फरमाते हैं, which I have translated as the keepers of the walled gardens of meaning and the flower gatherers of the meadows of words convey this through the scratching of their pens. A sudden thought occurred to the king of magic. He turned to Hereth, his wife, and said, "Summon the 5 Kutnis from your realm." Now, I think all of you know what Kutnis are, but in this case, it was an actual profession.
The Kutnis soon arrived, dressed in robes of dishonesty. Their sinister and devious schemes were beyond the realm of human imagination, and each one of them could give the devil himself lessons in treachery and deceit. In the darbar, they bowed before the Shahanshah, who asked them, "What can you do for us?" कुटनियों ने जो शाह को अपनी जानिब मुखातिब पाया और मौका जसारत देखा, फौरन करीब तख्त आई और बलागर्दां हुई कि हम तेरे वारी और निसार हो जाएं और सदके जाए, हमारे काम को आप क्या पूछते हैं? हमने सैकड़ों घर गारत कर दिए, लाखों को बहला फुसला कर बेच डाला, हजारों निस्बतें और ब्याह करा दिए और सदा तलाक़ें दिला दी, आपस में दो शहदाए मोहब्बत के जानी दुश्मनी करा दी और बहुत सी बहू बेटियों का जिनका दामन किसी ने ना देखा था उनको हमने नौ यार करा दिए और बड़े बड़े अड़ियल महाजनों के घर भेद बताकर चोरों को वहां कुदवाया जहां हवा ना जा सकती थी। अब दुनिया में तो कोई जेल और फरेब ऐसा होगा नहीं जो हमको आता नहीं। हम आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं, दोस्त रहते हैं और दुश्मनी करते हैं, हमारे कांटे का कोई मंतर नहीं। कहिए तो ज़मीन में समा जाए और दीनार पुश्ते माही तहत सरा से चुरा लाए, और अगर फरमाइए तो फल के चाहरम पर अपने तई पहुँचाएँ और वर्क आफताब से सोना उतार लाएँ। आसमान फाड़कर थिगली लगाना हमारे बाएं हाथ का कर्तव्य है। अर्श आज़म हिलने लगे, इस तरह दिल सताए। शहनशाह ने ये तकरीर सुनकर इस्तफ़ार फरमाया कि तुम में से ज़्यादा उस्ताद कौन है? उन्होंने अपने में से एक औरत को बताया कि वो सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और नाम उसका होशियार कुटनी है। उसने सबको कहा कि सबने उसके बारे में कहा कि ये हमारी बड़ी मलका शैतान की खाला है और अक्सर हमको फरेब इसने सिखाया है। The following extract is from volume 3 of the Lisme-Hoshubah, and the background is that Afrasiab, who's a bit of a womanizer, invites his mistress, the beautiful Zulmat Jabu, to help him in destroying the Islamic army. And naturally he incurs the wrath of his wife, Malika Harith. So, जब खबर आमद जुल्मात उसने सुनी, यानी अफरासियाब ने सुनी, तो सरदारों को हुक्म दिया कि बहर इस्तकबाल जाएं और ये भी कहा कि सब साहिरान जलीलुल क़दर इस मलका को मेरी बीवी समझकर तस्लीम करें। The English translation that Shahnaz had included in her book. Zulmat ordered the drums of travel be struck and journeyed in stages to reach Herod's camp. Afrasiab's spy birds informed him of her arrival. He sent prominent sardars to receive Zulmat and told them, now, all of you should acknowledge and respect her as you would my wife. Malika Harith frowned as she heard these words and said, "Why, Sahib? Since when did you arrange another palace? Mia, since the day I was unfortunate enough to come to your house, you've caused me nothing but heartbreak and unhappiness. Do you think you'll make someone else happier? Do not forget that it was because of my kismet that I became Malika of this realm. It is because of me that you became king. If it is in my destiny, I will be in comfort wherever I am. This empire is as lowly as my shoe to me. Why should I tolerate a common hussy like Zulmat?" Afrasiab was outraged by Herod's speech and said, Afrasiab was outraged by Herod's speech and said, now that's quite enough from you. I've suffered enough abuse from you over the years. My Samri, I've been patient long enough. Anyone else would have cut off your nose. What does a wife have to do with this? Men have 100 concubines. Badshahs have several harems.
Do their wives leave their palaces for this reason? Herod slapped her cheeks and shouted, "May I grind anyone to dust who dares to mention my nose? May somebody destroy him. Sahib, you're already so enamored of that harlot that you talk of cutting off my nose. I will slaughter her in a place where my serving woman washes her hands." She addressed the Darbar and said, "Look at this man. He is not seeing her face yet, and he threatens to cut off my nose. Once she's in bed with him, he will cut off the nose of everybody around him. I would rather wash corpses on Tuesdays and Sundays than stay married to him. No, Saab, we cannot continue this way." Afrasiab shouted back at her, "Shut your mouth, or I'll whip your hide off. Who do you think I am, that you let your tongue run away with you this way? I swear, I'll send for my executioner and cut off your head right now." Herod jumped off her throat, beat her breasts, and wailed loudly, "I will set fire to this empire and send this marriage to hell." Afrasiab raised his hand to hit her, but her handmaidens and ladies in waiting rushed forward to ward off. Everyone knows that no one can take your place. Women like her will come and go. Bibi, there's no point in taking offense. He's after all a man who will keep replacing his shoes. At least he happens to be a Badshah. Nowadays, even poor men seem to be bursting out of their loincloths, and their poor wives suffer quietly. Let it go, Queen. Afrasiab then sat on his throne, still trembling with anger, while Herod's attendants took her to a garden not far from the camp. They tried to console her as well as they could, but she remained distraught. But while the King of Magic and Zulmat enjoyed intimacies that night, lip to lip, bosom to bosom, Herod was overcome by fainting fits in the garden of pleasure. One of her handmaidens said, "Bibi, a man's love is always fickle and not to be relied on. If he's discarded a Parizad like you, how long do you think he will remain with this new hussy? It is just a game he will play for a few days." Another woman piped up, "You're so right. She will dominate the Darbar for a few days and then see what happens. He will probably not even talk to her." A third woman added, "Sister, mark my words. This lowborn who's been enthroned now will not be able to even sell berries to anyone in a few days' time." An elderly housekeeper told Herod, "Bibi ji, a Mian ji who lives near my house is known for his black magic. If Malika Alam orders me, I can bring an amulet from him." The Malika's old teacher also gave her own opinion. To get rid of this hussy, Malika should call out her name and throw neem leaves and salt in an old wen for 7 Thursdays. And thus the women continued babbling while Herod shed tears as a candle sheds wax. That's it, there too. Yeah. Well, this was just to give you a flavor of the language and the translation, but I think you will get the flavor of the language itself from these very, very talented young men, Misam and Nazar, and now I invite them to come and we will exit. क्या बात है। अगर आप कहें तो जैसे पुराने ज़मानों में आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए दास्तान सुनाई जाती थी, वैसे ही सुनाई जाए। बिल्कुल। ये जो इलेक्ट्रिकल आले हैं, ये कुछ काम नहीं करते। तुम इधर करो तो आवाज़ उधर चली जाती है। बेहतर है कि हम अपनी आवाज़ों पर रहें और आपके सामने दास्तान को पेश करें। वैसे तो दास्तान तिलिस्म होश विभा के बारे में आप सब लोगों को बता दिया गया है, आप सुन भी चुके हैं। कुछ गुजारिशात हमारी जानिब से भी हैं। दास्तान शुरू करने से पहले हमारी आदत रही है कि हम थोड़ा लोगों को जगा सकें तो अच्छा रहता है। सिलसिला ये होता है कि हम बैठे हुए हैं, सर्दी भी है, ज़रा हाथ भी शालों के अंदर हैं, परेशान भी हैं। ये वो कलाम है, वो गुफ्तगू है, वो दास्तान है
जो आपके रिएक्शन से चलेगी। तो उसके लिए सब लोग अपना जो सीधा हाथ है वो ऊपर की तरफ ले जाइए और इसे घुमाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरी रिस्ट के साथ। जी जी जी। अब ये घुमाते घुमाते अपनी जेबों में ले जाइए और मोबाइल निकालिए और बंद कर दीजिए। बहुत माजरत होता यह है कि जब मोबाइल बजता है तो हम परेशान हो जाते हैं, आप लोग भी परेशान होते हैं, दास्तान का मज़ा नहीं आता है। अभी इतनी खूबसूरती से शहनाज साहिबा यहाँ पे दास्तान के बारे में बता रही थी, हम भी जिक्र कर रहे थे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और इस तरह की चीज़ों में दास्तान तिलिस्म में होशुबा से बहुत सारी चीज़ें मुस्तार ली गई। जैसे कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा जो बहुत मशहूर हैं। बहुत सारे लोग अय्यारों में उम्र अय्यार कहते हैं, हम अमर अय्यार कहते हैं, असल में उनका नाम अमर अय्यार है। तो उनके पास बहुत सारे तोहफे हैं क्योंकि वो साहिरों से, जादूगरों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वो जादूगरी मुसलमान नहीं कर सकते ना, मुसलमान सिर्फ वही करते हैं जिसमें वो अच्छे हैं, यानी कि चालाकी, मक्कारी, अय्यारी। तो ये अय्यारी करते हैं। हाँ, अलबत्ता अब जादूगरों से लड़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी चाहिए जो उनके बराबरी की हों। तो अंबिया कराम ने उनके ख्वाब में आके उनको कुछ तोहफे दिए। अब वो तोहफे क्या हैं? उनमें पहला तोहफा जैसे है गली में अय्यारी। अब ये जो गली में अय्यारी है ये इनविजिबल क्लोक है जो हैरी पॉटर ने चुरा ली है, अब अमर अय्यार के पास नहीं है, अब वो उधर चली गई है। दूसरी है उनकी मशहूर ज़माना जंबील। अब जंबील जनाब एक चमड़े का बना हुआ थैला है जिसमें एक दुनिया आबाद है। उसकी खासियत ये है कि आप जो चीज़ चाहें उस जंबील में डाल लीजिए, वो जंबील कभी भरेगी नहीं, वो थैला कभी भरेगा नहीं। तीसरी उनके पास है फीता अय्यारी। ये तमाम जो मुल्क के जासूस हैं पूरी दुनिया में उन्होंने चुरा ली है। ये मेकअप का सामान है, इससे जैसी चाहते हैं वो सूरत बना लेते हैं, हसीन तरीन लड़की बन जाते हैं, कभी इंतहाई खौफनाक बुढ़े बन जाते हैं, कभी एक शेर की शक्ल ले लेते हैं, कभी बकरी बन जाते हैं। तो वो फीता अय्यारी से सब कुछ कर सकते हैं। तो फीता अय्यारी हो गई, गली में अय्यारी हो गई, और भी कुछ चीज़ों का जिक्र आएगा जो हम दास्तान में आपको बताते रहेंगे। अच्छा, अय्यार जब लड़ने के लिए जाते हैं तो अय्यारों की एक फ़ौज है, उस फौज में 4 अय्यार हैं और एक उनका कमांडर है जो बहुत मशहूर है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, 1 लाख के करीब हैं। उन चारों में जो मशहूर हैं उनमें मेहतर किरान, बर्क फिरंगी, जासोज अय्यार और जरगाम अय्यार बहुत मशहूर हैं। इनके लीडर हैं अमर अय्यार। तो ये करते हैं जनाब अय्यारियाँ, और ये अय्यारियाँ करते हुए तिलिस्म होशुबा की सरहद क्रॉस कर चुके हैं। असद तिलिस्म कुशा को कैद कर लिया गया है, उनको आज़ाद कराने ये जा रहे हैं। अब वहाँ क्या होता है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। 2 बातें और। पुराने ज़मानों में दास्तान बादशाहों के सामने सुनाई जाती थी, तो आप सब लोग यहाँ बादशाह हैं। तो बादशाह दाद देने में बुखुल से काम नहीं लेता, बादशाह तो दाद देता है। पुराने जमाने में तो वो मालाएं, जेवरात, पता नहीं क्या क्या निछावर कर देता था। हमें सिर्फ आपकी वाह वाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ताली नहीं पीटिएगा। पुराने जमाने में कहते थे जब ताली पिट जाए तो इज्जत उतर जाती है, तो वाह वाह कीजिए। जब परफॉर्मेंस कर चुके फिर ताली पीटिए। तो ये कुछ गुजारिशात और इंट्रोडक्शन था। आइए दास्तान की तरफ चलते हैं। बहुत कड़ी उर्दू से आपका सामना पड़ने वाला है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। तो साहिबों, जैसा कि रिवायात में आया है, दास्तान का आगाज साकी नामे से किया जाता है। आपकी इजाजत है कबला, शुरू करें। तो दास्तान की आगाज साकी नामे से। पेश खिदमत है साकी नामा। तो वो दारू पिला साकिये मैं परस के जो एक ही जाम में कर दे मस्त। देखिए, बुखल से काम ना लीजिए, अभी आप दास्तान सुनाने का मजा नहीं आता। अच्छा देखें, एक राज की बात आपको बताता हूं। बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें उर्दू के उन अल्फाज का मतलब न मालूम हो शायद, तो आप देखिए कोई ना कोई मुस्कुरा रहा होगा।
जैसे ही आप ये देखें वो लफ्ज सुन के मुस्कुरा रहा है, आप तार जाइए, ये मौका है वाह वाह करने का। और जहां खुद समझ में नहीं है, समझ जाइएगा ये अच्छा जुमला है, बोलना ही है वहां। तो हम शेर पढ़ेंगे, दास्तान सुनाएंगे, आपकी वाह वाह लेंगे, बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश। पेशे खिदमत हकीम, वो दारू पिला साक़िए मैं परस के जो एक ही जाम में करते मस्त। बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुश्क तू। हिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंग पंकारते हर तरफ। फिरे ऐसे हूँ मैं जादू कलाम, फुसूसाज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे में दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साथी वो अय्यारियां, करूं जाके वाइज से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुख्ते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल। जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। तो साकियान खुमखाने असमार जुरा नोशान जाम अफकार, बादे अरगवानी शंजरफ तहरीर से सागरे किरतास को इस तरह ममलू करते हैं कि जब अय्यारे बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चारों अय्यारे नामवर जिनके नाम पहले बयान हुए अलग अलग तिलिस्म की जानिब चले जाते थे। बराह मुख्तलिफ सहरा को तय करके सरहद तिलिस्म में आए, लेकिन एक दूसरे का हाल जोया रहा। साहिरों की सूरत बनकर चार तरफ तिलिस्म में फिरना शुरू किया। कहीं सहराए सरसब्ज देखा, किसी तरफ दरियाए ज़ख़्ख़ार मौजज़न पाया, पहाड़ों की दांग तिलिस्म पर किए नए नए स्वांग। हर तरफ बंगले साहिरों के बने, चौकियां जादूगरों की बहुक्मे अफरासियाब बैठी। साहिर सहर करते, आग और पत्थर बरसते। अलगरज अय्यार अलहदा अलहदा सब कैफियत देखते चले जाते हैं कि एक मकाम पर जो अमर आकर पहुंचा, सहराए अजीब वहां देखा कि घास के बदले कोसों तक मुक्कैश उगा है। जंगल सारा चांदी का है। अमर ने अपने दिल में कहा, ये सारा जंगल मुमकिन होता तो मैं जंबील में रख लेता। अरे क्या करूं, कुछ बस नहीं, क्यों कर इसे उठाऊं। इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि चलो जहां तक हो सके घास यहाँ की काट लूं। बस हंसिया जंबील से निकाल कर घास काटने लगा और हर तरफ फिर फिर कर देखता जाता कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, और जल्दी जल्दी काटे जाता था। कुछ थोड़ी बहुत घास काटी थी कि यकायक सदा आई, बाश ऐ दुज़्ज़े मक्कार, मैं तेरी तलाश में था, अब कहां बच के जाएगा। अमर ने गर्दन उठा के कहा, अरे अफसोस, क्या तकदीर बुरी है। नाचार उठकर जो निगाह की तो सामने से एक साहिर को आते देखा कि बदन उसका सारा चांदी का है, बाल सर के मुक्कैश के, असबाब सेहर का लिए, काले सांप सर से लपेटे ललकारता है। अमर उसे देखकर भागा। इसने सहर पढ़कर दस्तक जो दी, पांव अमर के जमीन में चिमट गए, आगे न जा सका। वो साहिर तलवार खींचकर करीब आया और कहा, हाँ तो तेरा ही नाम अमर है? अफरा से आपको फिक्र तेरी बेशतर है। मैंने तेरी गिरफ्तारी को जंगल बजोरे शहर चांदी का बनाया, आखिर तुझे पाया। अब शहंशाह के सामने सर तेरा काट कर ले जाऊंगा और खूब इनाम पाऊंगा। मैं अमर नहीं हूँ, मैं तो भैया घसियारा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ। तू मुझसे मक्कारी करता है? अफरा से आप पहले ही खबर तेरी दे चुका है। ये बातें होती थी कि और अय्यार जो कि अलग हैं, इनमें मेहतर किरान ने एक बुलंदी पर से ये माजरा देखा और कहा, अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। मेरे हमवतनों नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ स्पीचेज में बोला जाता है जब एक खास मौका आता है। वो मौका भी नहीं आया, आ जाएगा कभी ना कभी। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं सिलसिले को जहां से छोड़ा था।
तो हुआ ये था कि अमर अय्यार एक जगह फंस गया था और उसके दूसरे अय्यार ने, मेहतर किरान ने, एक बुलंदी पर से ये सब माजरा देखा और एक अय्यारी सोच कर रवाना हुआ। यहाँ ये साहिर के नाम इसका मुकर्नस जादू है, अमर को कत्ल किया चाहता था कि यकायक एक समत से सदा आई। भाई थोड़ा ठहरना। मुकर्निस ने देखा कि एक साहिर जिसके गले में सांप लिपटे हैं, त्रिशूल लिए हैं, मुंदरे कान में पहने हैं, पुकारता चला आता है। वो साहिर करीब आया और कहा, भाई इस चोर से जब तक माल मेरा कबूल न करा लीजिए उस वक्त तक कत्ल न फरमाइए। ये मेरे घर से सारा असबाब चुरा लाया। अब खबरदार। अरे असबाब तो दरकिनार, देखिए ये मोती अकेला रह गया, इसकी जोड़ी का ये चुरा लाया। ये कहकर एक मोती बराबर बैज़े मुर्ग निकाल कर मुकर्निस को दिखाया। वो देखते ही फरीफ्ता हुआ और कहा, भाई ये तुमने नायाब चीज पाई है, जरा मुझे भी तो दो, मैं भी अच्छी तरह से देखूं ये तुम कहां से लाए। मैं कोह मरवारीद पर रहता हूँ, वहाँ गौहर कुदरत से सामरी की जमीन में पैदा होते हैं। बस उन्हीं मोतियों में से मैंने ये दो छांट कर रखे थे, एक ये चुरा लाया, दूसरा मेरे पास है, लो देखो। ये कहकर उसने मोती मुकर्निस को दिया। मुकर्निस ने मोती हथेली पर रखकर अच्छी तरह से देखा और कहा, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। भाई इसको जरा मुंह की भाप दे लो, फिर इसकी चमक और आबोताब देखो। मुकर्निस ने मोती को दहन के करीब लाकर मुंह की हवा देना शुरू की। वो मोती शक हो गए और जिस तरह फुलझड़ी छूटती है ऐसे इसमें से धुआं निकला और मुकर्निस के दिमाग में मुंह और नाक की रातें जाकर पेचीदा हुआ। वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। किरान ने पलक झपकते एक बुगदा मारा कि इसका सर पाश पाश हो गया। आवाज धारो गिर आने लगी, गुल हंगामा, शोर बुलंद हुआ, तारीकी हो गई, आवाज कुदरत आई, मैं मुकर्निस जादू मारा गया, जान से हारा गया। अमर ने रिहाई पाई, किरान को गले से लगाया, अय्यारी की तारीफ की। किरान ने कहा, हुजूर ये आपकी ही तरबियत का नतीजा है, बताइए अब क्या कस्द है, क्या हुक्म है। बेटा अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी। ये कहकर किरान एक तरफ को चला और अमर एक तरफ को रवाना हुआ। लेकिन खबर मर्गे मुकर्निस जादू शहर के तायरों ने अफरासियाब को पहुंचाई। इसने फिलफौर दस्तक दी, एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ। उससे कहा, ये नामा मेरा महताब जादू के पास बयाबान रक्षा में ले जा। पुतला नामा लेकर चला और बयाबान रक्षा में पास महताब के आया, नामा दिया। उसने पढ़ा लिखा था, महताब जादू अमर और 4 अय्यार मुकर्निस को मारकर तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं, उनको गिरफ्तार करना, खबरदार गाफिल न होना। पुतला तो नामा लेकर चला गया, लेकिन इधर अफरासियाब ने मुकर्निस के चंद अजीज साहिरों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर लाश मुकर्निस की उठाओ और कातिल की उसके तलाश करो। वो सब ये हुक्म पाते ही चले और बाद लाश उठाने के फिक्रे गिरफ्तारी अय्यारा करने लगे। इधर महताब को जो पुतला नामा दे गया है, इसने बिना बर एहतियात एक मकान वस्ते सहरा में बजोरे शहर बनाया और उसे खूब आरास्ता किया। फर्शे मुकल्लफ बिछवाया, पलंगे मुरस्सा फर्श पर लगाया। कोई सामान्य राहत ऐसा न था जो वहां मौजूद न किया। एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पर उस मकान के लगा दिया और ऐसा शहर पढ़ा कि चांद माहे फलक की तरह रोशन हुआ। चंद साहिर दरवाजे पर पहरा देने बैठे और महताब जादू कमरे में उसके एक मकान के बैठकर मैनोशी करने लगा। फिर उसके ख्याल में आ कि नहीं, अय्यार बशक्ल मुबद्दल आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं। इससे बेहतर है कि वो तरकीब करूं कि जिस तरह की सूरत बनकर अय्यार आए पहचान लिए जाएं। ये सोचकर चंद कागज की चिड़ियां कतरी और ऐसा शहर पढ़ा कि वो सब जिंदा होकर उड़ी और कमरे की कानिस पर जा बैठी। खासियत उनकी ये रखी कि जब
अमर आए, एक चिड़िया कानिस से गिरे और पुकारे और जल जाए। जब कोई दूसरा शख्स आए, दूसरी चिड़िया गिरे, उसका नाम बतलाए और जल जाए। ये शहर बनाकर मेहताब जादू इत्मीनान तमाम बैठकर तमाशा देखने लगा कि यहाँ अमर और दीगर अय्यार जंगल मुकर्रस जादू का तय करके इसके सहरा में आए। अब अमर ने जो दूर से देखा कि बीचों बीच सहरा के एक मकान बना है, चांद बड़ा सा निकला हुआ है, यूं मालूम होता है कि आसमान का चांद है, बल्कि वो भी मुकाबिल इसके मांद है। कढ़ाव चढ़े, पकवान पकता है, साहिब डफलियां बजाते हैं, भजन सामरी की तौसीफ में गाते हैं। अमर ने जब ये माजरा देखा तो दिल में सोचा, अरे ये हरामजादे यहाँ बड़े मजे से बैठे हैं? इनको चलकर हलाक कर और इस सहरा को इनके जसदे नापाक से पाक कर। ये सोचकर अपनी सूरत एक साहिर की बनाई और रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो उन साहिरों ने कहा, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम रखते हो? मुझे नैनवाज जादू कहते हैं, मैं कोहे कलमाक का रहने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा बैठो, कुछ गाना वाना सुनाओ। अमर बैठ गया और इस तरह बल्लह ने दिलकश एक तान लगाई कि मेहताब जादू कमरे के अंदर बेकरार हो गया। दरवाजे से कमरे के सर बाहर निकालकर कहा, इस गाने वाले को यहाँ ले आओ, ले आओ। साहिर पकड़ के उसको अंदर ले गए। जैसे ही कदम अंदर कमरे के अमर ने रखा, एक चिड़िया काने से गिरी, पुकारी, अमर आया। अमर ने जब ये देखा, अरे नाम तेरा चिड़िया ने बता दिया है, फौरन गली में अय्यारी ओढ़कर नजर से गायब हो गया। मेहताब ने जब ये माजरा देखा तो कहा, अरे वो गवैया ना था, अमर था। चिड़िया को बोलते देखकर छुप गया है, तुम सब बाहर जाकर बहुत होशियारी से बैठो। जब साहिरों ने ये कैफियत देखी तो बाहर आकर बाहम मशवरा किया, अब कोई शख्स आएगा ना, कोई भी, उसे गिरफ्तार कर लेंगे। खुलासा कलाम, ये सब बहोशियारी तमाम बैठे और अमर यहाँ की सारी हकीकत दरियाफ्त करके इस जगह से दूर जंगल में निकल गया और जफीले अय्यारी बजाई। अब देखें, जफीले अय्यारी भी बड़ी कमाल की चीज है। आजकल फोन हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, दूसरे को बुला लिया जाता है। अब ये जफीले अय्यारी एक खास किस्म की सीटी है। मैं आपको सीटी सुनाता हूँ। जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई है वो सब अय्यार हैं। पहचान गए सीडी को। ये है जफीले अय्यारी, जो सिर्फ अय्यार सुनते हैं, बाकी कोई नहीं सुनता। तो उन्होंने जफीले अय्यारी बजाई। अय्यार जो जा बजा मुंतशिर थे, उनमें बर्क फिरंगी ने जफील की सदा सुनकर आपको पास अमर के पहुंचाया और कहा, अरे हुजूर उस्ताद फरमाइए, क्या हुक्म है? ऐ फरजंद, मैं इस वक्त मुनासिब जानता हूं कि तुम अपनी सूरत मेरी शक्ल की तरह बनाओ और वो सामने मकान बना है उस तरफ जाओ। वो तुम्हें अमर समझकर गिरफ्तार करेंगे, किस लिए कि वहां शहर की चिड़ियां बोलती हैं। और अपने जाने का सब हाल कहा और कहा, जब तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे तो उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि हमने अमर को गिरफ्तार कर लिया है। अरे फिर मैं आकर अय्यारी करूंगा, तुम्हें छुड़ा लूंगा। बहुत खूब। ये कहकर बर्क ने, क्योंकि भाई शागिर्द था, फौरन मजबूर होकर अपनी सूरत अमर की शक्ल की तरह बनाई और मकान की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो वो तो पहले ही तय कर चुके थे कि अब कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बर्क को अमर समझकर कैद कर लिया और जो शोरगुल कैद करने से हुआ, मेहताब ने कमरे पर से पूछवाया, हाँ भाई, किसे गिरफ्तार किया है? आप पहचानिए कौन है? हाँ, हम तो जानते हैं, अमर है, अमर। अच्छा, तो ठीक है, उसे यहाँ कमरे के अंदर ले आओ। अब जैसे ही कदम अंदर कमरे के बर्क ने रखा, चिड़िया काने से गिरी, पुकारी, बर्क आया। मेहताब ने कहा, अच्छा है, तो तेरा नाम बर्क है? नहीं, मेरा नाम अमर है। मेरी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है।
भला मेरा नाम बर्क होता तो मैं अपने तई अमर बतला कर क्यों मुसीबत में मुब्तला करता? क्या मैं नहीं जानता कि अमर के तिलिस्म में सब दुश्मन है? अच्छा, आप मुझे अमर नहीं जानते? हाँ, ना सही। अमर दिल में सोचा ये भी सच कहता है। कोई इतने बड़े मुजरिम के नाम से बरी होता होगा तो अपने तई छुपाएगा ना कि और गुनाहगार बनाएगा। ये सोचकर मेहताब ने कहा, अच्छा तो तूने कहा क्यों नहीं है अमर कि तू बर्क है, कह दिया होता बच जाता। मेरे कहने से क्या होता है? आप इतने बड़े साहिर हैं, आप अपने शहर से फौरन दरियाफ्त कर लेते। बात तेरी सच्ची है, मगर मेरी चिड़िया ने जो नाम तेरा खिलाफ बताया है, हो सकता है कि तेरा नाम अलावा अमर के बर्क भी हो या बर्क के अलावा अमर भी हो। हाँ, मेरा असली नाम बर्क है, लेकिन दादी ने बचपन में बदल दिया था, अमर रख दिया। मैं ना कहता था कि मेरी चिड़िया झूठ नहीं बोलती है, बस साबित हुआ कि तू भी सच्चा है और चिड़िया भी झूठी नहीं है। बस एक तस्दीक और कर लूं। अफरा साहब ने तेरी तस्वीर मेरे पास भेजी है, उससे तेरी सूरत मिला लूं। ये कहकर संदूकचे से एक तस्वीर निकाली और मुताबिक की। कुछ इस तस्वीर में और इसकी सूरत में फर्क ना पाया। यकीन कामिल हुआ यही अमर है। बहुत खुश होकर एक तरफ बंधवा दिया। अब हाल अमर का सुनिए कि जब बर्क गिरफ्तार हो चुका और अमर ने दूर से ये सब माजरा देखा, बस अपनी सूरत एक हसीना जमीला के ऐसी बनाई जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाबो निदामत से बदरे कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। सरासर शोले नूर, कुदरते खुदा का ज़ुहूर। हूर परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा न सुना। लबे लाली दुर्जे याकूत, रुखसारे ताबनाक आईने सिकंदरी, दंदान सिल्के गोहर। तेरे दंदानो लब ने कर दिया बेकदर आलम में, गोहर को, लाल को, याकूत को, हीरे को, मरजा को। बाजू कुव्वते बाजुए नाजो अदा, कलाई बिल्लोरी जिसके देखने से उस शाख को कल आई, जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानूस से निकल आई। ये उसके है साइदों का आलम के जिसने देखा हुआ वो बेदम, नियामे तेगे कज़ाए मुबरम, लक़ब है कातिल की आस्तीन का। सीना गंजीना नूर, शिकम तख्ता, छातियां अनमोल, सोहन मोहन मन हरन कंचन बरन अडोल, कड़े करारे चिकने ऊंचे गोरे गोल। इससे आगे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने बताया तो उससे आपको हो जाएगा इश्क। इसके लिए आप इंतजार करें और अगली निशिस्त का इंतजार करें, वहां सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब। Unard, I'm told. I must get the talaffuz right. Unard. And Munir Ahmed, that was easy, on the Shahnai. Both devoted followers of Lal Shahbaz Qalandar at his dargah. Fakir Sada Hussain is a 7th generation descendant of Nagara musicians and a Qalandari devotee of over 40 years standing. He was delighted to be invited by the museum and travelled for several hundred miles with Munir Ahmed in tow to be with you today, because he was determined that our audience would reverberate in their souls with his playing. Ladies and gentlemen, I'm sure you are all aware, and perhaps I'm being
sounding somewhat patronizing, but I thought I ought to tell you what nagaras mean to me, and that might help. Nagaras are a very ancient percussion instrument that also function as objects of veneration when they are played or drummed at dargahs. And they are a vital feature of the Dastangoi ritual. Historically performed at a darbar, a mazar, and in the village square, where large numbers of the public can assemble. They are generally made of copper and bronze drums over which buffalo skin is stretched. The ritual of the Nagara is intended, I am told, well, we all know that actually, to inspire emotion and awe, and at its most exciting, a sense in the public at large with a sense of togetherness and devotion amongst all. Coming swiftly to Fakir Sando and Munir Ahmed, I hope that they will reach and create very, very strong echoes within you, because they are intending to move pilgrims at dargahs as best as they can. They were followed by Fakir Aijazuddin and his wife Shahnaz, who have very kindly joined us from Lahore. Aijaz has shared with us his views of how the Hamzanama, reputed for its Dastangoi, has been a crucible for the school of miniature painting that we are all now familiar with throughout the subcontinent. Shahnaz spoke very eloquently and movingly on her translation of the Dastan of Tilisme Hoshruba, further elucidated by our Dastangos. 1001 Nights, she said, is as important to Urdu literature as the Tilisme Hoshruba is to Urdu literature, to Arabic literature, the other way around, I think. Because a presentation of this kind is very rare at the Mohatta Palace Museum, as some of you will be aware, I wish to proffer our gratitude to each and everyone who has made this event possible. To the trustees of the museum, who have always encouraged me and my team in our pursuit of displaying and documenting, and indeed recording the music of our cultural heritage, a very big thank you. To the Dastangos for joining us this evening and for inspiring us with much mirth in their renditions. To Fakir Sado and Munir Ahmed for their very gracious response to our invitation, and for their willingness and their charm. To the Mohatta Palace Museum staff, too. Can I see any of them at the back? Perhaps I can. It's getting quite dark, sorry. I have this effect on microphones. Sorry. Is zara upar kar dijiye, please? And their ability to rise to any task that is set to them. Thank you. I think there are many of them at the back there. To Saima Zaidi for her remarkable presence of mind and skills in shepherding our managing trustee, one Hamid Harun. Thank you all. अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी, ख़वातीन और हज़रात, कि आप तबर्रुक के लिए तशरीफ़ ले आइए. Thank you. You want to serve tea afterwards? Okay, sorry. I got that wrong. That also happens quite often. I think Fakir, sorry, the recital, quite right.
Fakir Sado and Munir Ahmed will now perform on the Nagara and the Sharnai and hopefully transport you to the realms beyond.
Fakir Kalandar